Good morning, dear children. This lesson is of chapter 17, part 3. Now we start from Simon Commission. So by 1920, the law and order situation of our country was getting out of control of British. British हमारे country को और control नहीं कर पा रहे थे क्योंकि Indians had already started getting united and revolt against Britishers. So in 1920, the government appointed the Simon Commission. ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बनाई कुछ लोगों को जोड़कर जिसका नाम था साइमन कमीशन एंड दे हैड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन व्हाट कुड बी डन टू इम्प्रूव द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इंडिया पे और अच्छा कैसे किया जाए उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी थी उन्हें. द ब्रिटिश डिड नॉट अपॉइंट एनी इंडियंस टू दिस कमीशन. दिस फर्दर रेज्ड द फ्यूरी ऑफ द इंडियंस. द कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन. तो जब ये कमेटी बनाई गई तो इसमें किसी भी इंडियन को नहीं रखा गया, एक भी मेंबर इनमें इंडियन नहीं था. तो इस बात से जो इंडियंस थे वो बहुत नाराज़ थे और जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने डिसाइड किया कि ये बॉयकॉट करेंगे इस कमीशन को, मींस इसके अगेंस्ट खड़े होंगे, इस पर रोक लगवाएंगे. इन 1929 व्हेन द कमीशन केम टू इंडिया, they were greeted with the slogan Simon go back. Now the Congress demanded complete independence for India. और 1929 में जब ये कमीशन मीन्स ये ग्रुप ऑफ पीपल जब इंडिया पहुँचे तो इन्हें साइमन गो बैक के नाम के ब्लैक फ्लैग के साथ ग्रीट किया गया. और अब कांग्रेस ने डिमांड किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. इन द बिगिनिंग द कांग्रेस, यू रिमेंबर वी स्टडीड इन द बिगिनिंग, that time the Congress only worked for the betterment and improvement of lifestyle of Indians. लेकिन अब by 1929 the Congress had demanded complete independence for India. पूरी तरह से आज़ादी, यानी कि अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे इंडियंस अपने कंट्री में, ऐसा डिमांड उन्होंने रखा. Now we come to 1935. For the first time the Government of India Act was passed and elections were held. The Congress won the election and formed the government, but this did not mean that the Congress enjoyed all the powers. The British were still the power holders. So by 35 there was an election in which various Indian parties contested and Congress won the election. लेकिन फिर भी सारे पावर्स जो थे वो कांग्रेस के हाथ में नहीं थे, ब्रिटिशर्स के हाथ में अभी भी बहुत सारे पावर्स थे. In 1939, World War II broke out. Broke out means started in 1939. Without consulting the Indian leaders, the British declared war on India's behalf. This angered the leaders of the Congress who resigned from their provinces. World War II स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया से पूछे बिना ही इंडिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया. इंडियन लीडर से पूछा ही नहीं और डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है. इससे जो कांग्रेस थे वो बहुत नाराज़ हो गए कांग्रेस के लीडर्स और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने अपने प्रोविंसेस से, मीन्स जहाँ जहाँ से वो रूल कर रहे थे वहाँ से. इन अगस्त 1942 द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी लॉन्च्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट. देयर वर वायलेंट प्रोटेस्ट्स ऑल ओवर द कंट्री एंड मैनी पीपल वर जेल्ड. So finally in 1942, under the leadership of Gandhi ji, Quit India movement started. Quit मतलब कि छोड़कर जाओ. Britishers were asked to leave India and all over the country, पूरी देश भर में अलग अलग जगह तरह तरह से प्रोटेस्ट हो रहे थे और बहुत सारे लोगों को जेल में डाला जा रहा था. Now there are some quick practice questions like why did British appoint the Simon Commission? When was it appointed? And when did the Simon Commission come to India? These answers I will send you. Next is Indian National Army. Subhash Chandra Bose was one of the greatest freedom fighters of India. The Indian National Congress had appointed him twice as their president. He was popularly known as Netaji. He organized an army of 40,000 Indian soldiers in Japan. This army was known as Azad Hind Fauj or Indian National Army. The Azad Hind Fauj fought bravely against the British, but they were defeated. Subhash Chandra Bose gave us the slogan Jai Hind.
So he is one of the greatest freedom fighters of India, and he had formed an army of 40,000 soldiers, and he was popularly known as Netaji. And the army that he created of 40,000 soldiers was known as Azad Hind Fauj or Indian National Army. Both is correct. And they fought bravely against the British, but they were defeated. And the slogan that he gave us was Jai Hind. Next, we study about India gains freedom. After the end of the Second World War, the British realized that they could no longer rule India. They agreed to leave India and thus started discussions with the popular political parties, the Congress and the Muslim League. However, it was decided that the country would be divided into two parts, India and Pakistan. Finally, on 15th August 1947, India attained freedom. On this day, Jawaharlal Nehru spoke these words: "At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." This line is very popular. Jawaharlal Nehru was appointed as the first Prime Minister of independent India. This marked the new phase in the history of India. Find out when is Netaji Subhash Chandra Bose birthday.